Bismillahirrahmanirrahim. Hello students of grade 8. Welcome in a class. Dear students, I hope you all are fine. This is your general science class, and students, as you know, we have completed our whole book. So from today's lecture we will start revision from unit number 1. So let's start today's class. Students, today we will start unit number 1, that is human organ system. So in this unit we will learn about the different human organ systems. Students, as in previous grades you have learned about the cell. What is cell? So cell is the structural and functional unit of all living organisms. A cell is the structural and functional unit of all living beings. So you know how different cells are combined together to form different more terms. So when cells combine together, they will form tissue. When two or more cells are combined together, they will form tissue. And then when two or more tissues combine together, they will form an organ. And when two or more organ will combine together, they will form a organ system. And many organ system which perform their own functions, they will combine and they will form an whole organism. And or how an organism is formed? An organism is formed by many different organ systems, and organ systems are formed by different organs, and different organs are developed from tissues. And tissues, when cells are different, when two or more cells are combined together, they will form tissues. Students, is an organ system perform their specific function? Yes, organ system which perform specific functions, and they will combine to form an organisms. Students, do you know any organ system in a human body? And absolutely your answer will be yes, because as you learned in previous grades about different organ system, for example, nervous system, excretory system, circulatory system, respiratory system, reproductive system, and digestive system. So there are different systems in a human body. These are the organ system which will combine together and they will form a whole organism. So students, what is digestive system? So digestive system purely concerned with the digestive tract of an organism and metabolic processes of an organism. And then what is circulatory system? And circulatory system is concerned with the circulation of blood in a whole body. And then reproductive system concerned with reproduction. For example, an human produces their offsprings, for example plants and their baby plants, animals and their baby animals. So this is known as reproduction. And then respiratory system, and respiratory system is totally concerned with the exchange of gases. That is, we inhale oxygen and we exhale carbon dioxide. So this is totally concerned with the gaseous exchange. And then what is excretory system? So excretory system is purely concerned with the excretion, or we can say that nitrogenous waste that are released from our body. And then what is nervous system? A nervous system is an organ system which is responsible for our whole body's functions. So students, in today's class we will discuss about the nervous system in detail. Now students, before going to the topic that is nervous system, we will discuss some examples related to nervous system. Students, you can ever observe when you touch a hot stove, instantly the message is conveyed to your brain, and the brain orders you to jerk your hand away. This happens within a nanoseconds. स्टूडेंट्स, आप किसी भी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तो उसके फ़ौरन बाद आप अपना हाथ क्या कर देते हैं, खींच लेते हैं वहाँ से. अपना हाथ आप क्या कर लेते हैं, पीछे कर लेते हैं. क्यों? Because when you touch a hot stove, then instantly a message is conveyed to your brain, and then your brain orders you to jerk your hand away. As this message is conveyed to your hand, then you jerk your hand. Similarly, if an insect
hit on your arm, your brain receives the information and send back a stimulus for you to jerk your hand and to flick the insect away before it stings you. Do you know why this is happening? How do these actions happen? These actions can happen just because of your nervous system. Your nervous system is responsible for your activities. कि जैसा ही आपको चाहे कोई इंसेक्ट आपको काट ले, या फिर आप किसी गर्म जगह चीज़ को हाथ लगाएं, या फिर आप किसी हद से ज़्यादा कोल्ड चीज़ को हाथ लगाएं, तो देन आप हमेशा एकदम से अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं. सो दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ योर नर्वस सिस्टम, एंड योर नर्वस सिस्टम कैरीज नैनो सेकेंड्स टू कम्प्लीट दिस प्रोसेस. कि आपने जैसे ही किसी गर्म स्टोव को या गर्म चीज़ को या किसी भी कोल्डर ऑब्जेक्ट को हाथ लगाए, दिस ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज स्टिमुलाई. दिस ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज स्टिमुलाई. जैसे ही आपने इसको हाथ लगाया, देन आपने एकदम से अपना हाथ वापस खींच लिया. क्यों? क्योंकि जैसे ही आपके ब्रेन तक मैसेज गया, विद इन नैनो सेकेंड्स या विद इन सेकेंड जो है, ये आपको वापस मैसेज कन्वे करेगा, और ये इस मैसेज की वजह से आप अपना हाथ खींच लेते हैं. सो दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द नर्वस सिस्टम. सो व्हाट इज़ नर्वस सिस्टम? हाउ वी कैन डिफाइन अ नर्वस सिस्टम? We can define nervous system as an organ system in the human body which carries messages from one part of the body to another and make us feel and react to things and situations is called nervous system. So what is nervous system? कि ये सिंपली आपके पास क्या है, दिस इज़ एन ऑर्गन सिस्टम. ये आपके पास डिफरेंट ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है, विच कंसिस्ट ऑफ ब्रेन्स एंड विच कंसिस्ट ऑफ नर्व्स एंड टिश्यूज़. सो ये आपके पास डिफरेंट ऑर्गन से मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बना हुआ है इन अ ह्यूमन बॉडी, जो कि आपकी बॉडी के एक पार्ट से मैसेज को लेके दूसरे किसी पार्ट तक मैसेज को कन्वे करते हैं. लेट्स सपोज कि जैसे भी हमने एग्जांपल डिस्कस की थी कि आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, तो हॉट ऑब्जेक्ट को टच करने के बाद क्या होगा कि आप एकदम से अपना हाथ जर्क कर लेते हैं. तो दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द मैसेज कन्वेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर पार्ट ऑफ द body. So this is known as nervous system. So students, what is nervous system? An organ system in a human body which carries message from one part of the body to another and make us feel and react to things and situations is called nervous system. Then we will move towards some explanation of nervous system. So we will talk about the cells of nervous system. So human nervous system consists of neurons and tissues. न्यूरॉन और टिश्यू पर मुश्तमिल होता है क्या चीज़? ह्यूमन नर्वस सिस्टम. एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस? दैट रेगुलेट स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्सेज. कि ये क्या करते हैं? स्टिमुलाई इज एनी चेंज इन आर environment. Any detectable change in our environment is known as stimuli, as you know this definition. So they regulate stimuli and responses. Now what are the parts of nervous system? So nervous system is a complex information processing system that mainly consists of what? They mainly consist of three parts, that is brain, spinal cord and nerves. So how many parts of brain are there? Nervous system are there. So nervous system consists of three parts, that is brain, spinal cord and nerves. Students, what are the cells of nervous system? So nervous system consists of neurons and tissues. And what are the function of that? That regulates stimuli and responses. And what are the parts of nervous system? Nervous system mainly consists of three parts, that is spinal cord, brain, spinal cord and nerves. Then we will discuss about the divisions of nervous system. So students, we have to underline all the important terms and mention all the headings at the top of your heading, at the top of your paragraph. So our nervous system is divided into two parts, that is CNS and PNS. What does CNS stands for? CNS stands for the central nervous system. And what does PNS stands for? The PNS stands for the peripheral nervous system. So how our nervous system is divided? Our nervous system is divided into two parts, that is CNS and PNS. That is central nervous system and
peripheral nervous system. Now students, what we studied in today's lecture, we have discussed about the nervous system. So what is nervous system? Nervous system is an organ system in a human body which carries message from one part of the body to another part of the body and make us feel and react to things and situations is called nervous system. So nervous system consists of neurons and tissues that regulate stimuli and responses. And what is stimuli? Stimuli is any detectable change in the environment. It may be physical change and it may be chemical change. And what are the parts of nervous system? Nervous system is a complex information processing system and it is mainly consist of three parts, and that is brain, spinal cord and nerves. And then our nervous system is further divided into two major parts, that is CNS and PNS. And what does CNS stands for? CNS stands for central nervous system. And what does PNS stands for? PNS stands for peripheral nervous system. Now students, move towards home assignment. So your home task is, there are different questions and you have to define these questions. Define nervous system with example. Explain the cells of nervous system and parts of nervous system. And the third one question is, draw the flow chart of division of nervous system. So students, जैसे कि आपको लेक्चर में ये तीनों क्वेश्चंस कराए गए हैं, सो आपने एज इट इज़ उठाना है. देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न दीज क्वेश्चंस. आपने इनको पहले लर्न करना है एंड देन आपने असाइनमेंट पेजेस पर इन क्वेश्चंस को राइट करना है. और आफ्टर राइटिंग आपने इसी होमवर्क असाइनमेंट्स को 27 ऑफ जनवरी को आपने कॉलेज में भेजना है. एंड वन थिंग मोर कि स्टूडेंट्स, ये होमवर्क करना आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपका फेब में एनुअल एग्ज़ाम है. उसके लिए आपने साथ साथ प्रिपरेशन जारी रखनी है और साथ साथ जैसे आप प्रिपरेशन करेंगे तो इस होमवर्क के मार्क्स भी, राइटिंग के मार्क्स आपके 50% आपके एग्ज़ाम में काउंट होंगे. सो आपने साथ साथ लर्निंग भी जारी रखनी है, प्लस आपने होम टास्क को भी अच्छे से करना है. एंड वन थिंग मोर कि स्टूडेंट्स, आप जो है ग्रेड 8 के स्टूडेंट्स, आप ग्रेड 9 के लिए जो है बहुत अच्छी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है अच्छा रिज़ल्ट ला सकते हैं. इन्हीं आपकी जो होल बुक हमने कवर कर ली है, तो इसी की बेस पे आपका जो एंट्रेंस टेस्ट होगा, एंट्री टेस्ट होगा, उसमें प्लस स्कॉलरशिप टेस्ट लिया जाएगा आपका. ठीक है, तो जो बच्चे विलिंग है वो स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए अप्लाई करें. 31 ऑफ जनवरी को आपका जो है स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है, उसमें आपने अप्लाई करना है. मस्ट अप्लाई करें ताकि आप जो है जो बच्चे अच्छी परसेंटेज अचीव कर सकते हैं उनको स्कॉलरशिप दिया जाएगा. प्लस अगर आपकी बहन भाई हैं कोई, तो मॉन्टेसरी सेक्शन के लिए जो है 24 जनवरी को एंट्री टेस्ट है. प्लस आपका जो ग्रेड 1 से 9 तक जो है ये 31 जनवरी को एंट्री टेस्ट है. तो आप जो पार्टिसिपेट करना चाहें वो लाजमी पार्टिसिपेट करें. और आपके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप स्कॉलरशिप अचीव कर सकते हैं. सो आप सब ने लाजमी ट्राई करना है. सो इसके लिए आपको होल बुक कवर करा दी गई है. जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है सबको आपने होल बुक से तैयारी करनी है. इज़ इट क्लियर?